Okay, so जय जगन्नाथ, वेलकम टू आवर सेकेंड क्लास. आम आज ये पढ़ा तुम केमिकल थर्मोडायनामिक्स सेकेंड क्लास. ओके, सेकेंड क्लास आम देखा. लास्ट क्लास आम बहुत सारा पॉइंट पढ़ते लाइक आम पढ़ते कौन कौन फैक्टर दैट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स रिलेट करी कौन कौन कॉन्सेप्ट्स रही. ओके, तापर तुम रही सिस्टम सराउंडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हम देखले ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड. तापर आसला होमोजेनियस सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक स्टेट फंक्शन, पार्ट फंक्शन. तापर आसला डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. थर्मोडायनामिक प्रोसेस अंडर आसला हमर आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, आइसोकरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस. So this is all about the terms related to thermodynamics. Property thermodynamic process under आसला open closed isolated. Okay, तो आम आज देखा इंटरनल एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी को आम लिखा बाय द लेटर यू. इंटरनल एनर्जी को आम लिखा को लेटर रे यू द्वारा. ओके, इंटरनल एनर्जी को आम यू लेटर रे लिखा. ठीक अच्छे. सो इंटरनल एनर्जी माने आम कौन देखा जमती आम बॉडी भितर कौन थाए आम समस्त भीतर गोटे इंटरनल पावर थाए. समस्त जो चाहिए दिन को 8 ରୁ 10 घंटा 8 to 10 hours we can do hard labor. It is our internal power. सेमती each आम एनवायरमेंट रे आम सराउंडिंग रे आमर यूनिवर्स रे each पार्टिकल रो भितर किसी गोटे एनर्जी थाए जोटा कि ता भितर इंटरनली थाए. इंटरनली माने तार कैपेसिटी दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. सो आम कहि परिबा दैट द एनर्जी stored in a substance, गोटे substance भितर जो एनर्जी स्टोर होता है, the energy stored in a substance by virtue of its chemical nature, by virtue of its chemical nature is known as internal energy. ताको हमें कौन कहबा that is known as internal energy. ठीक अच्छे. सो आमर जेकोसी एनर्जी जदि स्टोर हो जाता है बा किछि केमिकल एनी केमिकल सब्सटेंस भितर केमिकल प्रॉपर्टी जो जहाँ एनर्जी स्टोर होता है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल U and it can be represented as the total internal energy associated with a molecule, the total internal energy associated with a molecule can be represented as ताको हमें रिप्रेजेंट करि परिबा को भलिया दैट U is equal to capital U is equal to internal energy. U is equal to UR plus UV plus UT plus UE plus UN plus UP. कौन तुम्हें कह एत सब ना एत सब जिनस इंटरनल एनर्जी अंडर आसो. व्हाट इज R? R stands for the
रोटेशनल एनर्जी माने गोटे मॉलिक्यूल जदि रोटेशन करूची सेतिपई केतिकी एनर्जी दरकार मॉलिक्यूल ए भलिया रोटेट करूची सेतिपई जहा एनर्जी रोटेशनल एनर्जी वाइब्रेशन होची वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी माने मूव करूची स्ट्रेट लाइन रे मूव करूची ट्रांसलेशनल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भितर जो एनर्जी रही तापर आछी न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस रो जो एनर्जी रही पोटेंशियल एनर्जी ये सब गुड़ाक रही तुम ये सब गुड़ाक इंटरनल एनर्जी को डिनोट करे ये सब गुड़ाक एनर्जी मिसिले इंटरनल एनर्जी कह वेयर यू आर इज इक्वल टू रोटेशनल एनर्जी यू आर कौन तुम रोटेशनल एनर्जी ओके यू आर टा हूँ तुम रोटेशनल एनर्जी यू भी कौन वाइब्रेशनल एनर्जी यू भी हूँ वाइब्रेशनल एनर्जी यू टी कौन ट्रांसलेशनल एनर्जी तापरे यू ई होची इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूएन होची न्यूक्लियर एनर्जी बुझा पड़ची ना जहार किसी भी डाउट्स रोची काइंडली पचारिबो ओके यूपी माने पोटेंशियल एनर्जी अच्छा जो माने गूगल मीट रू भी जॉइन करचंदी दे कैन आल्सो आस्क मी तमे माने भी पचारि पारे इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एम आई ऑडिबल वॉइस सुने जाउची तो the students who have joined from Google Meet जो मैंने Google Meet रू जॉइन करचंदी सेमानक पय do you have any doubts No sir okay so you can ask me doubts any times ठीक अच्छे तुम माने मते डाउट पचारि परिबो okay sir thank you तापर हम देखिबा it is a state function it is not a path function so हमें लिख परिबा that internal energy is a state function तुम कहबो सर state function किन देला path function किन देलानी कारण internal energy वो केबे बढ़ी थाए केबे डिक्रीज हुए केबे इनक्रीज हुए केबे डिक्रीज हुए आम एक्जाक्टली जान पारिबानी से आमको कौन करियो पड़ो फाइनल केते इंटरनल एनर्जी इनिशियल केते या ऊपर को आम बेस करके ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू वी कैन डिटरमाइन दैट इंटरनल एनर्जी इज ए पाथ फंक्शन सो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन सॉरी इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल value that means it depends upon the initial and final value the initial and final value initial and final internal energy final और initial internal energy ऊपर depend करिवो कोटा जनरली जे कोनोसी गोटे बॉडी रो इंटरनल एनर्जी ओके so हमें जदि देखिबा if you see that del u change in internal energy is given by ut u2 minus u1 u2 माने कौन what is del u is the change in internal energy कारण हमें डायरेक्ट मेजर करि परिबा नहीं change in internal energy डायरेक्ट चेंज ही जनरली मेजर करहब जोटा कि एक्यूरेट दब u2 u1 एक्जाक्ट दब नहीं u2 और u1 कौन रहिबो u2 इज द फाइनल एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल
internal energy. Okay. Final and initial internal energy is equal to your U2 and U1 are final and initial internal energy. Complete. Next we'll move to next point. So it is all about internal energy. Next time देखिबा internal energy रो कौन रही छी तुम्हारा points बा तुम्हारा कौन रही छी ताकू नहीं कि sign convention related to internal energy. So give side heading, that is sign convention of internal energy. इंटरनल एनर्जी रो साइन केमदी डिटरमाइन करा जाता है. ठीक अछि. इंटरनल एनर्जी रो साइन कोन रहइबो, कोठी पॉजिटिव रहइबो, कोठी नेगेटिव रहइबो, कोठी जीरो रहइबो, कोठी डिटरमाइन करी होबो नाही, एटसेट्रा. ऑल दिस कैन विल बी डिस्कस्ड इन साइन कन्वेंशन. ठीक अछि. सो फर्स्ट वन इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक माने जोठी हीट रिलीज होबो. ठीक अछि. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे कौन हम ना डेल यू इज कौन आसो नेगेटिव. डेल यू नेगेटिव हम कहीं एक्सोथर्मिक माने जोटी हीट रिमूव हम, जोटी हीट रिमूव हम ता कौन को आसो एक्सोथर्मिक. कारण एठे यू ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट रो एनर्जी कम थिबो और रिएक्टेंट रो एनर्जी अधिक थिबो. सो यू आर इज ग्रेटर देन यूपी. यू आर माने यू आर मीन्स internal energy of reactant. UR means internal energy of reactant. अधिका थिबार तो रिलीज हैला ना, रिएक्टेंट रो एनर्जी अधिका थिबारु एनर्जी रिलीज हैला. whereas UP कोन, UP is the internal energy of product. UP is the internal energy. UP माने उत्तर प्रदेश नो, internal energy of product. ठीक अछि. सो UR माने रिएक्टेंट रो एनर्जी अधिका थिबारु ही जेतोले गोटे केमिकल रिएक्शन हला. केमिकल रिएक्शन सपोज मु कहबी दैट A give rise to B plus C. A give rise to B plus C plus heat. B plus C plus heat. माने like it is just like your electron affinity. It is just like electron affinity जोटी किछि एनर्जी रिलीज हुए. तो एडा कोन को आजबो एक्सोथर्मिक. आउ एठी तुम्हारा रिएक्टेंट रो एनर्जी कोन थाए, रिएक्टेंट रो एनर्जी जनरली अधिक थाए, सेति पई से हीट रिलीज कला. सो एई केस रे हम जदी देखिबा डेल यू नेगेटिव केम देला, डेल यू रो वैल्यू केम दि नेगेटिव हला ना. डेल यू इज इक्वल टू कोन आसीबो यू आर यूपी माइनस यू आर, यूपी माइनस यू आर. ताले एठी लार्जर टा कोड हबो यूपी ना यू आर, व्हिच वन इज लार्जर? यस, जो माने गूगल मीट रे अछो को व्हिच वन इज लार्जर, यूपी और यूआर? Sorry, UP. UP as Sorry. UR. Is the larger one. UR is the larger one. So smaller minus larger. It is कौन है? Smaller minus larger. ताले इटा negative, right? Very good, Smriti. UP is the smaller one and UR is the larger one. So smaller minus larger हेले इटा कौन होगा? Negative होगा. Okay. Next हम जिबा for endothermic reaction. For endothermic reaction. Endothermic reaction पे कौन रहेगा? Expression for endothermic reaction. Endothermic माने जो heat तुम्हारा require होती हो. For example, ionization energy. जितने हमें गोटे
atom रे energy दबा electron remove होबो so it is an example of endothermic reaction endothermic reaction रे कोन आसीबो endothermic reaction पई ur is less than up कारण ur reactant side रे हमको energy दबा को पड़िबो माने a plus heat give rise to b अच्छा एठी कोन रहइबो del u रो वैल्यू नेगेटिव ना पॉजिटिव del u रो वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव Positive. del u is positive good del u is positive very good Shrutimay very good Sahil बढ़िया next third point is good Anurupa and Saraswati next third point is for cyclic process माने पुणी अथरे तार बेक प्रोसेस cyclic माने पुणी अथरे बेक पळे आसीबो cyclic process माने पुणी अथरे बेक आसीबो ताले हम कोन कहबा रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट रो कोन रहबो सेम रहबो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट रो इंटरनल एनर्जी सेम रहबो for cyclic process the reactant and the product have similar internal energy so del u here becomes as del u is equal to how much in this cyclic process del u is equal to how much for cyclic process very good Shrutimay it is equal to 0 good it is equal to 0 okay it was all about the term that is internal energy रो एठी रहिला सरला तापर हम देखिबा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एंथैल्पी तापर पॉइंट हम देखिबा एंथैल्पी बाय हीट एंथैल्पी को कह जाय हीट जोटा को हम लिखु h ठीक अछि एंथैल्पी हमें जानू जे किछ गोटे रिएक्शन एंडोथर्मिक रे हीट दबा को पड़े एक्सोथर्मिक रे हीट रिलीज हुए ठीक अछि सो एंथैल्पी माने हीट ओके ताले तुम कहबो सर इंटरनल एनर्जी आउ तुम हमरो हीट कंटेंट भितर डिफरेंस कोन हीट कंटेंट माने तुमरो दरकार पड़ले हमें किछि हीट दबा किछि हीट रिमूव करबा किंतु इंटरनल एनर्जी माने ता भितर जहा एनर्जी थिबो बुझिला इंटरनल एनर्जी माने ता भितर जहा एनर्जी थिबो सो हमें कहि परिबा द heat given or removed from a system can be termed as enthalpy सो हमें हीट इधर सिस्टम को दबा बा सिस्टम रो नबा ठीक अछि ताले ए जो एक्सचेंज होउची एनर्जी दैट इज नोन एज योर एंथैल्पी ठीक अछि सो द हीट कंटेंट और एंथैल्पी associated the heat content or enthalpy associated with a system can be represented as ताको हमें रिप्रेजेंट करि परिबा को भलिया that h is equal to u plus pv h is equal to कोन u plus pv h is equal to u plus pv ओके u plus pv बा जेतु हमरो एइडा भी कहबा जदि हम एंथैल्पी होची गोटे भी स्टेट फंक्शन एंथैल्पी गोटे स्टेट फंक्शन काहे कि u होची गोटे स्टेट फंक्शन आ p प्रेशर ऑफ वॉल्यूम दीटा होची तुमरो पाथ फंक्शन सो इट इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन ठीक अछि व्हाट इज u वेयर u is equal to internal energy u is internal energy what is p
P is the pressure of the system. P is equal to pressure of the system, pressure of the system, and V is equal to volume of the system. Okay. तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखिबा as enthalpy is a state function, as enthalpy is a state function, path function no, as enthalpy is a state function, we can write आम लिख परिया केमती नॉट del h, we can write del h is equal to कौन हम h2 minus h1, h2 माने कौन u2 plus pv2 minus u1 plus pv1, ठीक अच्छे। h1 रो एक्सप्रेशन कौन हम u1 plus pv1, h2 रो u2 plus pv2, then you can write here u2 minus u1 plus pv2 minus pv1, further u2 minus u1 माने del u plus p v2 minus v1 कॉमन कर दियो v2 minus v1, and del u plus p del v, so del h is equal to del u plus p del v. This is the expression for change in enthalpy of a system. Clear? Enthalpy, this is the relationship between internal energy and enthalpy. Also expression for the enthalpy, also this is the relationship between enthalpy and internal energy. तापरे sign convention, next is given sign convention for enthalpy. First हम देखिबा exothermic reaction पे. For exothermic reaction, exothermic reaction पे कौन हम मते कहबो जे कहार एनर्जी अधिका हबो, प्रोडक्ट रो ना रिएक्टेंट रो, कहार हीट अधिका हबो। एक्सोथर्मिक रे कहार हीट अधिका हुए, प्रोडक्ट ना रिएक्टेंट, which one is larger? Can you please tell me as the summary? I am little confused. Sure ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା ପ୍ରୋଡକ୍ଟ, sure ସରସ୍ୱତୀ wait for a while. और exothermic reaction ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? exothermic reaction ପାଇଁ ଆସିବ ଆମର that HP is less than HR, कारण प्रोडक्ट हीट कम रहइबो, रिएक्टेंट हीट अधिक रहइबो, ठीक अछि। सो ए केस रे हमर del H कम आसीबो, del H is equal to हमर आसीबो HP minus HR which is equal to negative. So exothermic reaction रे कौन आसीबो, for exothermic reaction reactant रो एनर्जी अधिका, so del H रो वैल्यू नेगेटिव आसीबो। ओके, for endothermic reaction माने जोटी एनर्जी यूटिलाइज होबो for endothermic reaction रे कोन होबो, HP is greater than HR,
ताहले del H एठी कोन हो HP minus HR नेगेटिव ना पॉजिटिव अरे कौन हो next for cyclic process sorry for this for cyclic process बा cyclic process रे कोन हो for cyclic process रे HF is equal to HR ताले del H कोन आसीबो cyclic process ପାଇଁ del H is equal to 0 clear cyclic process रे del H रो value 0 आसीबो is it clear क्लियर बुझियला isocoric process रे कोटा constant रहबो which one remains constant in isocoric process which one remains constant yes process और reaction same रहे सर क्लास केते बेले होची क्लास 8 pm रे होची स्नेहा ठीक अछि 8 pm रे डेली होची ओके सबोले वर्तमान 2 दिन हला क्लास स्टार्ट हलानी 8 pm रे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस कोन हो वॉल्यूम हमर चेंज वॉल्यूम सेम रहबो माने v1 इज इक्वल टू v2 रहबो बा हमर del v 0 रहबो अच्छा व्हाट इज द फार्मूला फॉर del h जो माने जूम रो सॉरी गूगल मीट रो छ को del h रो एक्सप्रेशन कोन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर del h those who are in zoom tell me what is the expression for del h del h रो एक्सप्रेशन कोन एबे कि समय आगु कहली पिला माने अरे टेल मी del h रो एक्सप्रेशन लिखि न तुम माने जो माने ये भी अच्छो del h इज इक्वल टू कोन आसीबो अरे del u प्लस p del v so p del v term del u plus p into del v kete 0 so it becomes as del u so you can write here del h is equal to del u
ताले del H is equal to del U केतेबेला फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस पई माने जेतेबेले वॉल्यूम सेम रहइबो बा वॉल्यूम जेतेबेले कांस्टेंट रहइबो सेतेबेले कोन हबो दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्लियर इंटरनल एनर्जी होची हम भीतर जहा एनर्जी रहउची आ एंथैल्पी होची हम केते हीट दोचे बा केते हीट रिमूव करूचे क्लियर हीट रिमूव करबा बा हीट दबा ए सब गुडा का आसीबो तुमरा एंथैल्पी अंडर रे आ इंटरनल एनर्जी माने हमर केते हीट हमें दोचे ओके क्लियर इज इट क्लियर बुझी पाला समझते डिड यू अंडरस्टैंड अरे किछि रेस्पॉन्स आसुनी कोन हला कथा कोन कोह बुझी पारछु समझते डिड यू अंडरस्टैंड यस सर क्लियर नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट पॉइंट दियो तुमरा एंथैल्पी एंथैल्पी रे अंडर रे आउछि जे एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन बा एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन फर्स्ट टाइम देखिबा हेडिंग दियो गिव हेडिंग एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन बा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोटे सॉरी डिफरेंट एडा एंथैल्पी डा टिके काटी दियो सॉरी एंथैल्पी डा बाहर गोटे मिनट नहीं एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन ही लिखो सॉरी एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन गोटे रिएक्शन रा एंथैल्पी हमें केमती बाहर करबा हाउ कैन यू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन so lekho the enthalpy of a reaction गोटे रिएक्शन रो एंथैल्पी हमें केमती बाहर कर परिबा the enthalpy of a reaction can be determined by the formula del H is equal to del H del RH R माने रिएक्टेंट del RH माने रिएक्टेंट रो हीट बा रिएक्टेंट रो एंथैल्पी del RH is equal to तुम्हारा कौन आसीबो the enthalpy of products जदि धर 4-5टा प्रोडक्ट थिबो ताले सब गुडा प्रोडक्ट समेशन कर देबो देन enthalpy of reactants ओके सो हम जदि कहबा enthalpy of product माने कौन हबो ना summation over this one is product HP minus summation over HR so del H is equal to del RH is equal to माने enthalpy of the reaction can be calculated by using the formula summation over HP minus summation over HR HP माने कौन जिते सब प्रोडक्ट रही से समस्त एंथैल्पी माइनस जिते सब रिएक्टेंट अच्छी से समस्त एंथैल्पी कले जहाँ आसीबो दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन तापर हम देखिबा गोटे एग्जांपल नबा फॉर एग्जांपल CH4 gas plus 2O2 gas combustion of methane कौन दबा पिला माने मीथेन को combustion कले कौन आसीबो जो माने गूगल मीट रे अच्छा आंसर जल्दी जल्दी को मीथेन को combustion कले कौन कौन दबा anyone methyl go Sir, carbon dioxide and water. very good carbon dioxide and water okay so you will get carbon dioxide and water carbon dioxide in gas phase and water in liquid phase
eta methane ko combustion kalo you will get the substances. Now if I say what is the change in enthalpy of the reaction, that is del HR but del H, simply del H, enthalpy of the reaction kon habo, that is your enthalpy of methane CH4, del H of CH4 ठीक अच्छे, further plus del H of O2, wait del H for CH4, like we have to write this like this, আমি এমনি লিখে দেব del H for CH4 মানে methane, del H for O2, but here 2 O2 are that, so 2 into del H of O2 minus CO2 del H of CO2 minus 2 into del H of water. एमती हम तो ओ ना 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 एटा है जो भूल ही गला, ओह दिस वन इज प्रोडक्ट गला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देले, एटा भूल ही गला, सॉरी फॉर दिस, एटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन अच्छे CO2, सो CO2 माने del H of CO2 प्लस del H of water, किंतु दुईटा थिले 2 del H माइनस del H of methane, sorry again minus 2 into del H of O2, so इधे हमें H del H बदल रहा है, हमें लिख परिवा del H M, del H M, del H M माने molar heat enthalpy, molar enthalpy माने कौन, गोटे मोल पिछा जेती की enthalpy, that is known as molar enthalpy. Okay, so where HM is equal to कौन, where HM is equal to molar heat enthalpy বা molar enthalpy of the substance. Molar enthalpy of the substance माने enthalpy of the substance, enthalpy of the substance, enthalpy of the substance, enthalpy of the 1 mole of the substance, enthalpy of the 1 mole of the substance, sorry, enthalpy of the 1 mole of the substance, 1 mole substance रा enthalpy जहाँ रहिबो, that is known as HM. Okay, HM means your molar enthalpy of the substance. Clear? बुझिएला? Yes, sir. Next we will discuss next. So it is enthalpy of a reaction. Next I mean देखिबा enthalpy of a ideal gas, sorry, enthalpy of a, next is enthalpy of a reaction involving ideal gas, involving ideal gas. तुम कहबो सर ideal gas कौन माने आदर्श गैस, आदर्श गैस, राइट, आदर्श छ आदर्श, involving ideal gas. So ideal gas, what is ideal gas? The gas which obeys, the gas which obeys different gaseous laws, जे gaseous law को माने ताको कहजिबो ideal gas, जो सॉल्यूशन टा gaseous सब सॉल्यूशन रो लॉ को माने ताको कहजिबो ideal solution, जे gaseous law को माने ताको कहजिबो ideal gas. Okay, the gas which obeys all the gaseous laws ताको हम कहबा ideal gas. ठीक अछि, तो ideal gas हम generally भाबिबा जे सब gas, all gas are generally ideal, we will think that all gases are generally ideal. ठीक अछि, so enthalpy of a reaction, let's consider the enthalpy of a reaction involving
ideal gas कौन, that is A gas plus B gas give rise to C gas है ना. Let it be m moles of A, n moles of B and p moles of C है ना. The enthalpy of a reaction involving ideal gas, এই ভলিয়া ideal gas ର ଗୋଟେ reaction ରହିଛି, has expression given by तार expression कौन हबो, has expression given by कौन आसीबो ना del H is equal to हमर as usual आमे जेमदी नोथले del H is equal to del U plus, you can write that del H is equal to del H of reactant minus del H of del H of product minus del H of reactant. अच्छा suppose तुमको product रो केते जाना नहीं, reactant रो केते जाना नहीं, so we can calculate it, we can derive it. आमे एठे केवल पकई दबा del H is equal to del U plus P del V, del U plus P del V. Let it be equation 1. Let it be equation 1. तापर आमे गोटे आइडियल गैस इक्वेशन मन रखिबा. आइडियल गैस इक्वेशन कोन, PV is equal to nRT. yes जो m n और p में आई एटा माने डिफरेंट stoichiometry m n and p, this represents the stoichiometry. M is the A stoichiometry of A, n is the stoichiometry of B and p is the stoichiometry of C. Okay, clear? Okay. Stoichiometry केते मोल निया है, m मोल n मोल p मोल, it is in balanced state, एटा balanced state है. we know, तमे न जानथिले भी कहबो जे we know, you know, I know, all know that the expression for reaction example सबुथिरे m देइतला तार रीजन कोन, सबुथिरे या आगो केस रे नियाइथिले ना m del H m m represent that molar enthalpy माने मोल पई 1 मोल पई. okay, m represents the molar enthalpy of the substance गोटे मोल पई. ठीक अछि, या आगो केस रे हम ज देखिबा एभला del H m थिला, m here represent molar थिला. जदि एटा सेकुलर थांदा s थांदा, पेकुलर थांदा p थांदा, बट m मोलार रहिछि, सो m रो स्टार्ट हेछि, मोलार लिखाला. here m and p this represents the stoichiometry. बा जदि तुमको m and p जदि तुमको भल लागुनी, let me erase them, ताको erase कर देबा, let make them as xyz, let make them xyz. if you are uncomfortable with this number, then xyz, you can choose a b c l m n o p q etc. we know that the expression for combined gas equation, नहीं combined gas नो ideal gas apply हो, sorry टिक की मैसेज कर देले माइंड डाइवर्ट हो जाउछि. the expression for ideal gas equation, can you take constant terms in some cases? yes, these are the constants. we know the expression for ideal gas equation is, ideal gas equation रो एटा मन रखियो, PV is equal to nRT, कौन कौन है PV, कौन P, कौन V, कौन N, कौन R, कौन T, कौन. I will explain all these things. PV is equal to nRT. जे तुम्हारा आइडियल माने गैसियस स्टेट कटि जाइछि, अदरवाइज एटा गैसियस स्टेट रे एक्सप्लेन कराइतला और डिराइव कराइतला. व्हाट इज P? where P is pressure, where P is equal to pressure of the gas, pressure given to the gas. V is equal to volume of the gas. Then T is the absolute temperature. Absolute temperature माने Kelvin रे.
एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज केल्विन केल्विन रे मेजर करा हबो नॉट इन सेल्सियस रे नो एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रो एक्सप्रेशन जदि हम देखिबा इट इज 2 कैलोरी मोल इनवर्स और दिस इज इक्वल टू 8.314 into 10 to the power 7 joule Kelvin inverse mole inverse sorry 8.314 into 7 10 to the power 7 8.314 थियो सर 8.314 it is 8.314 8.314 जूल मोल जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मु भूल हो जाइतिला लिखिबारे 8.314 आउ तापर आउ गोटे वैल्यू रही 0.082 liter atm mole inverse Kelvin inverse. So these are the three values of R. These are the three values of R. ठीक है clear? These are the three values of R. ताले आमे एटा अप्लाई करिबा इफ वी अप्लाई दिस दैट pv is equal to nrt अप्लाई करले कोन हबो ताले pdv p del v is equal to del n rt is equal to del n rt del n माने कोन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स सो pv थिला माने वॉल्यूम जदि हमर चेंज माने केमदी हैला एटा जने धर कहइबो केमदी हैला सर अपन एटा केमदी कर देले मु एक्सप्लेन करछ देन pv1 is equal to कोन आसीबो n1 rt again pv2 is equal to n2 rt now pv2 minus pv1 now pv2 minus pv1 is equal to केते आसीबो n2 rt minus n2 n1 rt again you have to take common rt common कर दिले n2 minus n1 into rt so this is del n rt so you can find that p del v is equal to del n rt okay बुझियला ना कार डाउट रही है डेरिवेशन रे डाउट रहला कि किछि p del v is equal to del n rt do you have any doubts in this section let it be equation number 2 या को हमें equation number 2 दे देबा ताले putting equation 2 in equation 1 we get putting equation 2 in equation 1 we get equation 2 को equation 1 रे put करले कोन आसीबो that del h is equal to del u plus del h is equal to del u plus del n rt ठीक है क्लियर
गोटे क्वेश्चन बाहर कर क्वेश्चन गोटे लिखा ये क्वेश्चन टा आमर लास्ट आज क्लास लास्ट टॉपिक रहिबो calculate the enthalpy of a reaction of the following reaction. क्वेश्चन टा बाहर करछि एक्चुअली गोटे बुक बाहर करछि एंट्रेंस बुक टा बाहर करछि एंथैल्पी क्वेश्चन छाड़ ए क्वेश्चन लिख दबा calculate the enthalpy of the reaction calculate the enthalpy of the reaction, that is CO2 plus H2 gas plus H2 gas give rise to CO plus H2O gas. so यहाँ को बैलेंस करबा किस दरकार नहीं. given del H naught माने heat of formation of for CO2 CO and H2O are minus 393.5 minus 111.31 minus 241.80 किलोजूल मोल इनवर्स. या को बेस करके आउ गोटे प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास रे आनिबी. ठीक अछि. सो एठी क्वेश्चन रहिछि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ए डाटा सब रहिछि माने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बा मोलाल एंथैल्पी सब कहिछि. CO2 रो केते, H2 रो केते, CO रो केते. H2 गैस थिले यू हैव टू टेक द हाइड्रोजन रो जनरली 0 हबो. हाइड्रोजन रो जनरली तुम कोन नबो 0 नबो. गैस जेतोले जे कोनसी मन रखो जे कोनसी हाइड्रोजन आ गोटे ऑक्सीजन एमाने पई एंथैल्पी सब बळे 0 रहबो. तो एठे मु आ गोटे डाटा दे दोछि दैट एंथैल्पी ऑफ del HF naught for H2 is 0. ए डाटा भी देछि. सॉल्व करिबा बे हमें आंसर देखिबा केमति सॉल्व करिबा. हाउ कैन यू सॉल्व दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन del H is equal to कोन हबो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट रे कोन रहइबो प्रोडक्ट रे रहइबो तुमरा CO और H2. CO रो केते minus 11.31 minus 11.31 प्लस आउ कोन रहिछि H2 minus 214.80 minus 241.80 बुझा पड़ला माइनस
रिएक्टेंट रे कौन रही -393.5 CO2 रो +0 ठीक अच्छे सॉल्व कले के हम एटा को ऐड कर 1 8 3 11 1 2 3 3 4 1 5 2 1 3 सो -353.11 प्लस एटा केते आसीबो 393.50 सो 10 रु 1 गले 9 4 1 गले 3 फर्दर 12 रु 3 गले 9 8 रु 5 गले 3 so it is 39.39 39.39 की ठीक अच्छे ना नहीं नहीं भूल अच्छे एटा 40.39 हम सॉरी मोर कैलकुलेशन माने सब्सट्रैक्शन टा भूल गला इट इज 40.39 यस 3 3 बोले 0 9 9 ରୁ 5 बोले 40.39 एंड यूनिट कौन थिला यार किलोजूल मोल इनवर्स तो किलोजूल मोल इनवर्स बुझा पड़ला सो दिस इज द डेल एच ऑफ रिएक्शन दिस इज द डेल एच ऑफ रिएक्शन कार डाउट रही कि एठी आउ ए क्वेश्चन रे डू यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओके स्टिल कहार किसी डाउट जदि अच्छी कह थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस एंड नेक्स्ट क्लास रे सर रिपीट कर दिंतु प्लीज कोटा सरस्वती अच्छा रिपीट कर देबी एटी क्वेश्चन रही देख CO2 गैस H2 CO H2 ठीक अच्छे आमर ये देखा जदि आम एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कौन फॉर्मूला दैट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स कौन हम एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स जदि हम देखा -11.31 प्लस ये सब ऐड कराला माइनस रिएक्टेंट कले एतिके आसला ओके सो पुनी एटा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ सरस्वती लेट मी रिपीट व्हाट आई हैव टोल्ड इन दिस क्लास आज हमें कौन कौन पढ़े इंटरनल एनर्जी होची यू रे कौन यू होची तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड एटा स्टोरेड हो जाइए एनर्जी स्टोर्ड केते स्टोर हुए एनर्जी गोटे सब्सटेंस रे केते एनर्जी स्टोर हुए दैट इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी एटा समेशन ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल इलेक्ट्रिकल एंड न्यूक्लियर एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी फर्दर आम इंटरनल एनर्जी हेतु स्टेट फंक्शन सो आम यार चेंज इन वैल्यूटा बाहर कराइबा एक्सोथर्मिक नेगेटिव एंडोथर्मिक पॉजिटिव साइक्लिक जीरो एंथैल्पी जदि हम देखिबा एंथैल्पी हमें केते हीट गिवन दबा बा रिमूव करबा दैट इज एंथैल्पी एंड इट इज द फॉर्मूला U plus PV व्हाट इज P means pressure and V means volume U माने इंटरनल एनर्जी सो डेल H इज इक्वल टू एटा भी जेहेतु तुम्हारा स्टेट फंक्शन H2 minus H1 so you will get that del U plus P del V okay and exothermic reaction पे it is negative for endothermic reaction it is positive for cyclic process it is 0 and isochoric process it is del U. Next enthalpy of a reaction is given by the change in enthalpy of product and change in enthalpy of reactant. The difference between enthalpy of product and reactant is known as enthalpy of reactant. Further it can be calculated for an ideal gas as the from the expression that is P del del H is equal to del U plus del N RT. Del H is equal to del U plus del N RT. It is equation 3. Okay, in the next class we will discuss the other points mane asanta kali that is the different types of enthalpies. कौन कौन एंथैल्पी रही आमर केमिस्ट्री रे कौन कौन एंथैल्पी रही और कौन कौन टॉपिक्स ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट क्लास 8टा बेले स्टार्ट कर देवा आज बहुत इश्यू है तुम बहुत माने स्लो हो गला सिस्टमटा किस समय पे से हैंग हो बहुत टाइम लगेगा सॉरी फॉर दिस थैंक यू अगेन